the operative part of fractures. Okay. So you must be clear by now that when you are getting a case of fracture, then the first thing you must look at the diagnosis. What is there fracture or not? And I told you earlier that first you must have so if it's a fracture, then clinically you want to ascertain whether this could be a fracture or not. And the best clinical assessment for fracture is there should be localized, very localized bony tenderness, and that tenderness should be circumferential. यदि tenderness हम anteriorly, posteriorly, laterally, medially, जहाँ भी हम चाहे देख सकते हैं, and it should be tender locally at that direct point. So with this arousal of suspicion, we go ahead with radiology, that is X-ray, and then after confirming the diagnosis, we have a fixed principle of first reduction, then maintenance of reduction till it unites. This is the simplest, in the most simplest term, this is the management, closed reduction or closed management of fractures. But then we have certain conditions when closed reduction of fracture doesn't work. And the commonest example is when the fracture is associated with a gross laceration of soft tissues. मान लो किसी high velocity, I told you earlier that now we are in an era of high velocity. तुम्हारे जैसे बच्चे जो हैं, they feel pleasure in zooming the bike, and what happens? There are so many instances of roadside accidents, and mind you, these roadside accidents are not low velocity trauma, because low velocity trauma in general that gives rise to only bony injury. There is not much of soft tissue injury, but whenever it's associated with high velocity injury, that is by way of roadside accidents, then you incur soft tissue laceration as well. And this soft tissue laceration may be from small punctured wound to very large area of bony denudement. Bone becomes denude, एकदम bone नंगा हो जाता है ऊपर से लेकर नीचे तक. When you examine these cases, roughly 3 or 4 inches of proximal bone and 2 or 3 inches of distal bone, it's all denude, it's devoid of soft tissue. So these are the problems which closed reduction won't work, because we have to take care of soft tissue, we must respect the soft tissue healing, and then we have to take care of bone as well. So these cases, number one, in the indication part I told you, you must reduce the fracture till it unites, and maintenance of reduction till it unites. There can be situation where this maintenance work is not proper. So the first indication, failure to reduce. हमने कोशिश किया फ्रैक्चर को बाहर से रिड्यूस करने के लिए, it didn't reduce in the first instance. And what do you think is the commonest region of failure to reduce? Suppose there is soft tissue interposition. Fracture tibia है, fracture femur है, fracture bone forearm है. You know, all these bones are having a very nice thick encapsulation of soft tissue, that is muscles. यदि दो फ्रैक्चर के बीच में muscle interposition हो गया, what will happen? No matter how much of traction and counter traction you are applying, the bones, they do come across in a position, they do come in a position, but since there is soft tissue interposition in between, it won't unite. And I told you how to know soft tissue interposition.
because when you in a long shaft bone like femur or forearm bones, you can literally feel the crepitus. जैसे ही हम reduce कर देते हैं तो crepitus मतलब you do this to and fro movement, you can feel the movement of the bone and you can feel it. इसी को कहते हैं crepitus. So eliciting crepitus in a displaced fracture, it's a good sign or bad sign? It's a good sign. That probably we have been able to reduce the fracture. We have been able to bring it in the normal position. So it's rubbing against each other and I'm feeling the crepitus. Absence of crepitus, it arouses suspicion probably there is soft tissue interposition. Could you follow? बात समझ आ रही है? So in this way we go ahead with number 1, failure to reduce, failure to maintain reduction. हमने आज reduce किया, आज की तारीख में खूब बढ़िया प्लास्टर लगा लिया और 7 days के बाद जब follow up ने patient को बुलाया, the fracture was displaced. The fracture was displaced. And what is the region? The region is bow stringing. Bow stringing जैसे धनुष बाण देखा है ना, अभी रामायण सीरियल चल रहा था, धनुष की तरह, जैसे बोन धनुष की चाप की तरह होता है और सॉफ्ट टिश्यू उसकी डोरी की तरह होते हैं. तो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, दे आर लाइक द स्ट्रिंग ऑफ द बो. तो वो स्ट्रिंग इतना टाइट हो जाता है कि इट कैन डिस्प्लेस द फ्रैक्चर इवन आफ्टर रिडक्शन. दिस इफेक्ट इज नोन एज बो स्ट्रिंग इफेक्ट. धनुष की प्रत्यंचा का इफेक्ट, बो स्ट्रिंग इफेक्ट. So because of this soft tissue effect, the bone may be displaced after reduction. So first पहला वाला, दूसरा failure to reduction, दूसरा maintenance of reduction and तीसरा failure to unite. हमने खूब बढ़िया से reduce कर दिया. There are regions for which the fracture doesn't unite or it goes to delayed union. I will take a separate class what is delayed union, what is non-union, all those things. But once the fracture doesn't unite, so these 3 indications and the 4th indication, you are dealing with a grossly lacerated wound associated with fracture. So these 4 indications. 5th indication, there is some neurovascular damage. Fracture हुआ, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई और उसके साथ सॉफ्ट न्यूरोवैस्कुलर इम्पेडिमेंट हो गया. मेन पॉकेटियल आर्टरी जो है वो बंद हो गई, रप्चर हो गई. मेन सैटिक नर्व जो है वो रप्चर कर गया. These things they warrant surgery, some sort of surgery in these fracture cases. This first slide I just show it to you because this is the thing which has revolutionized our thinking of orthopedics. This is image intensifier. बढ़िया से नहीं दिखाई दे रहा है. I think you can, the picture you can see in your books also. This is the machine. This is the C arm. C की तरह ये arm है. एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है. देख रहे हो नहीं आप? ये दोनों देख रहे हो दोनों? In between these 2 C, this is X-ray tube and this is the reception part. So what happens? We put the limb somewhere here. तो यहाँ से जो X-ray होगा, that will cast its shadow there, and this shadow will send the impulses to this modulator machine. और ये modulator machine जो है इस X-ray के कंप्यूटर को इसको बढ़िया से रीड करके it will give a figure here in the monitor. It's just like any monitor, screen monitor, and you can see जैसे जैसे तुम लिंब को घुमाओगे, रोटेट करोगे, it will give you AP view, lateral view, oblique view, any view you rotate the limb and you can see the picture in the monitor. क्या फायदा होगा इससे? इससे फायदा होगा कि on the table you can know what is the status of your fracture. जो फ्रैक्चर ऐसे था वो ऐसे हुआ या नहीं, या कहीं ऐसे हुआ तो ऐसे तो नहीं हुआ.
एक व्यू में ऐसे देखोगे तो तुमको ठीक लगेगा, लेकिन एक व्यू में देखोगे तो ऐसे लगेगा, एमुलेटेड लगेगा. So this is a comprehensive view to give in the theater. In the theater, it gives you a lot of indication about the fracture itself. So this machine has changed our approach to these fractures. And with this, I go to next thing, that is external fixation. Now I will be telling you the methods of internal fixation. कैसे fix करना है. So the first thing which comes to our mind is this is a type of external fixation. What is happening? You see, this is the area of fracture, and where you find there are multiple pieces in the bone. This type of fracture, since it's associated with open injury, the first approach of treatment should be that I must reduce the fracture in a manner not to interfere metal inside the bone area, fracture area. Because this is all potentially infected area. An open wound with fracture is all infected, potentially infected area. और potentially infected area में यदि हम metal डालेंगे तो it can flare up infection. So what I do, I must keep the limb fixed and no internal fixation device in this area of fracture. So what we do, through a rod and pins distally and proximally, and tightening these rods, these pins in the rod, what we have done, we have achieved fixation but externally. बाहर से, यहाँ से none of the metals are there in contact with the wound or fracture. So this way what we have done, we have achieved fixation, we have achieved alignment of the bone, and there is plenty of area in front by which we can take care of the wound. First we can do a wound debrima, we can excise the wound, we can suture the wound, and later on for a few days or weeks we can take care of the wound by proper dressing.
and during this time of wound healing, my external fixation device is keeping the bone intact. बात समझ में आ गई? So this is the principle of external fixation. This type of external fixation is known as AO external fixation device. AO, I told you earlier, Association of Osteosynthesis. This was a group of thinking in Switzerland primarily, whether they have done a lot of research work in orthopedic practice and treatment of bone fractures. So they have devised this sort of apparatus. This is known as AO external fixation. This is another thing. The same principle, उसी तरह की चीज यदि हम चाहें तो इस तरह से भी अचीव कर सकते हैं. What we do, suppose this is the fracture site. तो एक रिंग से, छल्ले से एक ऊपर और एक नीचे, और ये छल्ले को किस रॉड से हमने फिक्स कर रखा है. 3 रॉड से इस छल्ले को फिक्स कर रखा है, और इस छल्ले के अंदर में 2 टाइटनिंग वायर्स हैं, and these wires are passed through the bone. Through the bone, these wires are passed. ठीक है? यहाँ भी, यहाँ भी. अब क्या करना है कि we can keep the fracture in reduced manner by suitably manipulating here, 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 कहीं भी. चाहेंगे कि हमको लेंथन करना है तो इसको थोड़ा नीचे कर देंगे, शॉर्टन करना है शॉर्टन कर देंगे. यदि ये बोन जो है इस तरफ थोड़ा भाग रहा है, एलिवेशन है, तो इस वायर को खींच के इस तरफ टाइटन करके उसको सही जगह पे ले आएंगे. सो इन अ वे दिस इज नोन एज Elizarov apparatus. Elizarov apparatus. So Elizarov apparatus has been used in a multiple way, in so many ways. और so many ways में पहला वे तो ये हुआ जो हमने बताया for external fixation. दूसरा lengthening of bone. Lengthening of bone कैसे हुआ? यहाँ पे हमने एक कॉर्टिकॉटमी कर दिया, जस्ट कॉर्टेक्स को काट दिया. अब कॉर्टेक्स को काटने के बाद नाउ आई स्टार्टेड डिस्ट्रैक्टिंग, यहाँ डिस्ट्रैक्शन करना शुरू कर दिया. फ्रैक्चर साइड कहाँ पर है? देखिए ऐसा है ना कि दिस फ्रैक्चर साइट में डिस्ट्रैक्शन जो है दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग. ये मैं बता रहा हूँ तुमको. देयर आर 2 or 3 things which I will tell you later probably. The first thing is external fixation. External fixation यहाँ से समझ में आ गई कि suppose there is a fracture here, somewhere here, तो हमने इसको फिक्स करके छोड़ दिया. दूसरी चीज है कि suppose इस फ्रैक्चर को हमको या इस चीज को भूल जाओ. Now this external fixation principle को भूल जाओ. This is something else entirely different. यहाँ क्या है कि suppose a bone was small. यदि किसी दिन ख्याल आए, though it's not done for this purpose, but definitely there is limb length discrepancy. Limb length discrepancy का मतलब समझा कि because of some disease in early childhood, मेरा एक पैर तो नॉर्मल बढ़ा, दूसरा पैर जो है बिकॉज ऑफ सम एपिफिजियल कार्टिलेज प्लेट में कोई डिजीज हो गया जिसकी वजह से वो बढ़ा नहीं. तो क्या होगा कि द लिम्ब लेंथ विल बी शोइंग डिस्क्रिपेंसी कि बायां पैर जो है नॉर्मल है और दाहिना पैर जो है 6 इंच छोटा है. इज इट पॉसिबल और नॉट? दिस टाइप ऑफ लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी इज डेल्ट विथ लाइक दिस. जिसमें कि फ्रैक्चर नहीं है, हमने फ्रैक्चर बनाया, दिस इज क्रिएटिंग फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर बना करके मैं डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, बोन को डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और जब लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी 6 इंच की आ गई
तो धीरे 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 इसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, so that this portion it shows callus formation by the scientific process of distraction osteogenesis. Distraction osteogenesis मतलब कि periosteal tube is intact. केवल हमने corticotomy कहा है, I have done corticotomy. The periosteal tube is entirely intact. और जब हम distraction इसको करेंगे with the rate of 1 millimeter per day. 1 millimeter, how small it is. तो 1 millimeter per day के हिसाब से इसको distract करेंगे. तो suppose if I want to achieve 100 millimeters and that is 10 centimeters. और 10 centimeters कितना हुआ? 4 इंच हुआ. तो 4 इंच की शॉर्टनिंग है पैर में, तो 4 इंच की लेंथनिंग के लिए हाउ मच शुड आई वेट? 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से 100 डेज हमको वेट करना है टू अचीव 10 सेंटीमीटर्स. इज इट क्लियर टू ऑल? और जब 10 सेंटीमीटर्स हो जाएगा देन आई विल फिक्स इट. हमने कहा ना कि इलिज़ोरोव केम लाइक दिस, केम फॉर दिस पर्पस, लेकिन इसके इतने इमेंस यूटिलाइजेशंस हो गए दैट आई वांट टू थ्रो लाइट ऑन दिस मॉर्निंग. तो पहला सिंपल एक्सटर्नल फिक्सेशन डिवाइस के रूप में, दूसरा बोन लेंथनिंग डिवाइस के रूप में, और तीसरा एक और है बोन ट्रांसपोर्ट. बोन ट्रांसपोर्ट में क्या है? अब देखो उसको यहाँ पे समझो बढ़िया से. इट्स नॉट इन द पिक्चर. सपोज this much of bone here is टूटा and there was traumatic extrusion of bone. 4 इंच का बोन यहाँ से टूट करके बाहर गिर गया. पेशेंट को नहीं मालूम है कहाँ गिरा, because he met with an accident in the highway. He was unconscious and didn't know that 4-inch segment of bone right from this place of leg, it just extruded out, बाहर फेंक दिया गया. ये सिचुएशन समझ में आ रही है? अब मेरे पास आया तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? वन ऑप्शन ये कि मैं इसको 4 इंच जो सेगमेंट फेंका हुआ है नहीं है वहां, उसको मैं टेलीस्कोप करके 4 इंच छोटा कर लूं. इज इट क्लियर? मैं बोन को छोटा कर लूं 4 इंच, allow it to heal and then go for lengthening, जो हमने बताया अभी. Is it clear to everybody? If there was traumatic extrusion of say 4 inches of bone, then first option I have is मैं उसको डॉक करके 4 इंच छोटा करके जोड़ दूं, and then later on जुट तो गया, जुटने के बाद फिर आई would go on doing something else. Then came the principle of bone transport. Bone transport में क्या होगा कि suppose this portion of bone is missing, तो मैं क्या करूँगा कि I will do corticotomy यहाँ पर जैसे किया हुआ है, और इस corticotomy को यहाँ पर करके, और यहाँ तो फ्रैक्चर है, इस बोन को मैं धीरे 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 खिसकाना शुरू करूँगा. एंड 4 इंच का गैप है तो 4 इंचेस 100 डेज में मैं आ जाऊँगा, और ये जो corticotomy किया है दिस विल यूनाइट बाय periosteal tube. बात समझ आएगी नहीं समझ आएगी? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ बोन ट्रांसपोर्ट. So 3 principles are here. First is external fixation device. Second is lengthening device. And third, which I told you, bone transport. जिसमें कि कहीं भी osteoperiosteal gap है, say of 4 inches, 5 inches, 6 inches, 7 inches. तो क्या मैं करूँगा? उसके ऊपर corticotomy करके मैं पूरे सेगमेंट को gradually I will transport the bone. And this transportation after that many millimeters a day के हिसाब से
उतने दिन के बाद वो डॉक कर जाएगा, आ जाएगा करीब, एंड न्यू पेरियोस्टियल ट्यूब will automatically form bone that will be an intact limb. बात समझ में आ गई? पढ़ो, नहीं समझ में आएगा फिर पूछना। So with this three principles, एक और चौथा प्रिंसिपल इसमें है इलिजर में, that is correction of deformity. Suppose the bone has united and united in a grotesque manner, एकदम टेढ़ा मेढ़ा unite हो गया, deformed, it has led to a deformed bone. That also can be tackled very well by Elizarov principles. So these four principles, as external fixation, as bone distraction for lengthening, as bone transport and correction of deformity, all these four principles are taken care of by Elizarov rings. And what is the commonest disadvantage of Elizarov? You can think of, it's a grotesque thing. अब इतना बड़ा छल्ला जो है उसको 6 महीने 9 महीने उसको पहनना है। यदि पैर में है तो इतना बड़ा छल्ला उसे पहनना है, ठीक है? So these are the methods. These are special rings. This is Taylor special ring, spatial ring, trampoline effect. सेम ओपन है, ओपन मूड में कैसे लगता है? क्लियर पिक्चर है इनके लिए। नाउ वी कम टू ये एक्सटर्नल फिक्सेशन हो गया। सो एक्सटर्नल फिक्सेशन फॉर fixing the bones or fractures from outside. अब तुमने देखा कि neither in Elizarov nor in AO fixation device the metal or wire is not in the fracture. Did you see it? Everything is away from fracture, and whatever assembly is there, it's outside the limb. So by doing so, what we could do? We could remain in the no harm zone. और नो हार्म जोन क्यों? क्योंकि फ्रैक्चर वॉज पोटेंशियली इन्फेक्टेड सिंस इट वॉज एन ओपन वुंड। ओपन वुंड में कभी भी हम लोग कोशिश करते हैं, ऐसे बाद में तुम लोग और पढ़ोगे दूसरी चीजें, लेकिन फॉर योर स्टैंडर्ड वी ट्राई फॉर सम, आई मीन वी डेफिनेटली ट्राई नॉट टू पुट मेटल इन द फ्रैक्चर विसिनिटी. सो एक्सटर्नल फिक्सेशन हैज ए क्लियर रोल इन दैट. नाउ कमिंग टू internal fixation device. Internal fixation device में primarily we have two types of things. One is plate, another is nail. What is the advantage of plate? Plate मतलब a metallic plate being kept on to the bone के ऊपर रखना, and then tightening it with screws both proximally and distally. Bone plate की क्या खूबी हो सकती है? And I will show you the example of bone nailing. A nail, a rod being put in the medullary canal of a long bone. Can you think इन दोनों में difference क्या हो सकता है? मोटी-मोटी चीजें क्या difference हो सकती है? A very important difference is if a nail is there, that's a stout nail, मजबूत nail है, वो bending force को वो रोकेगा, वो sliding force को भी रोकेगा, लेकिन कौन सा ऐसा force है जिसको कि bone अच्छी तरह से नहीं रोकेगा? That is rotational force. जो bone जो है, जो rotational force जो होगा, that will probably not be taken care of by a simple nail. Is it clear? But on the contrary, a plate will take care of all the three displacements. ये rotation नहीं होने देगा, angulation नहीं होने देगा, and no distraction, no translation. So in theory,
Which one is better? A plate is definitely better. But what is the main disadvantage of plate? A plate is involving this much of bone. अब देखो कि ये फ्रैक्चर है, तो इस फ्रैक्चर के पूरे बोन को हमको खोलना पड़ेगा. So more of exposure to bone, more operating time, it all invites infection. बात क्लियर हो गई? So these are the pros and cons of both doing kneading and plating. But plating are done for 4 or 5 principles. Plating का 4 or 5 principles है. The first is compression plate. Compression plate में क्या होता है? This is the bone. We put the plate, और plate में जब लोग आओगे वहाँ तो हम दिखाएंगे. The holes of the plate are in such a manner that once as you tighten the screw, the bones they fall closer to each other. जैसे एक स्क्रू यहाँ डाल दिया, एक स्क्रू यहाँ डाल दिया. जैसे जैसे स्क्रू टाइटन होगा, ये बोन जो है बहुत टाइट होता जाएगा, दोनों के बीच में आता जाएगा. Such is the compression plate. And this compression plate, after proper tightening, it takes the shape of this thing. और ऊपर से देखोगे तो ऐसा होगा. तुमने स्क्रू डाला था बिल्कुल एक तरफ, एक एंड में, लेकिन जब ये टाइटन हो जाएगा तो यहाँ बीच में आ जाएगा. ठीक है? ये जो है ये बीच में जैसा आ जाएगा. इसको जब दिखाऊंगा तब probably you will be able to understand it better. So this is the compression plate principle, and the plate used in compression plate. The second principle is neutralization principle. This is neutralization principle. What happens? You find this is a simple fracture. Simple एक तरफ का transverse fracture है. Suppose you have this type of fracture. What's there? This type of fracture is one main piece, second main piece, but there is intervening third piece also. This type of third piece will V-shaped structure is known as butterfly segment. क्योंकि बटरफ्लाई के इसको ऐसे कर दो तो ये बटरफ्लाई की तरह दिखता है. This type of third piece at the fracture site is known as butterfly segment. Neutralization plate का principle क्या है? You first fix the butterfly segment with both proximal and distal pieces. लेकिन is it going to hold it properly? No, क्योंकि तुमने इस फ्रैक्चर लाइन के 90 डिग्री पे इसको फिक्स कर दिया इससे, और इस फ्रैक्चर लाइन के 90 डिग्री पे इसको फिक्स कर दिया इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं इंटरफ्रैगमेंटरी कंप्रेशन. इंटरफ्रैगमेंट, दो फ्रैगमेंट के बीच में हमने कंप्रेशन डाल दिया, बट यू नीड टू सपोर्ट द होल बोन. So this bone, this plate, what it is doing nothing. ये केवल proximal और distal end को रोके हुए, जहाँ है वहीं रखे हुए. This type of principle is known as neutralization plate principle. The third is bridge plate principle. Bridge plate principle में क्या होता है? Suppose there is a segment of cross comminution in the bone. Bone जो है ना multiple pieces में टूटा हुआ है. What this does? This doesn't touch anything. इस पोर्शन को हम छूते नहीं हैं. What I do? I pass a plate, long plate, and fix it, keeping the alignment like this. You don't have to touch this segment, because again, ये जो इस तरह के जो comminuted pieces जो होते हैं, they invite fracture, they invite infection in a big way. So यदि ये हमारा infect कर गया, then the whole process will be very, very messy. So in order to avoid infection,
what I have done a bridge plating. From this portion to this portion, I have plated the bone, not touching or not interfering with the vasculature of the comminuted fracture. Then the fourth principle is buttress plate fixer. Principle. क्या इसमें है? जैसे मान लो लोअर एंड फीमर का है, लोअर एंड फीमर की वाई शेप फ्रैक्चर हो जाए, दोनों कंडाइज फ्रैक्चर हो गए और ये बोन से अलग हो गए, यहाँ पे भी मल्टीपल पीसेस हो गए. What I do in the normal part of the bone, I have fixed the plate. और प्लेट इतना वेल कंट्रोल्ड है कि जैसे जैसे इसको फिक्स करेंगे, this whole the things will be compressed. और तब फिर इसके बाद यहाँ पे पिंस डालेंगे, स्क्रू डालेंगे. दिस इज नोन एज बट्रेस प्लेट. ये सपोर्ट करता है, ये प्लेट का ये पोर्शन जो है इसको सपोर्ट करके रिड्यूस रखता है, एंड दैट एड्स इन रिडक्शन. एंड द फिफ्थ और सिक्स्थ व्हाटएवर इट इज, फिफ्थ इज टेंशन बैंड प्रिंसिपल. टेंशन बैंड प्रिंसिपल इज, नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ ऑलिक्रेनम. ऑलिक्रेनम में भी फ्रैक्चर होता है. ऑलिक्रेनम का एग्जांपल इसलिए लिया कि टेंशन बैंड प्रिंसिपल्स अप्लाई इन ए कॉन्वेक्स एरिया, इन ए कॉन्वेक्स सरफेस, एंड यू सी दैट ऑलिक्रेनम फ्रैक्चर इट मेक्स अ कॉन्वेक्स सरफेस. अब कॉन्वेक्स सरफेस पे यदि मैंने एक फिगर ऑफ 8 टाइप की वायरिंग करके इसको टाइट कर दिया, तो इसमें क्या होता है कि फ्रैक्चर ऑलिक्रेनम इज नोन फॉर डिस्ट्रैक्शन. क्यों डिस्ट्रैक्शन? बिकॉज द थिक मसल ऑफ ट्राइसेप्स इज ऑल द टाइम पुलिंग इट अप. यहाँ जो ट्राइसेप्स अटैच्ड है, ये फ्रैक्चर को हमेशा रिड्यूस नहीं रखने देगा. इसलिए क्या करते हैं कि अप्लाइंग द टेंशन बैंड प्रिंसिपल्स, वी do a figure of 8 tightening of stainless steel wire, and this stainless steel wire keep being on the convex side of the bone. जो distracting force था उसको compression force में डाल देता है, and the distracting force of triceps is no longer a distracting force. जितना हम इसको टाइट करेंगे उतना ही वो कंप्रेसिव फोर्स में बदल जाएगा, एंड माय फ्रैक्चर ऑलिक्रेनम व्हिच वाज इफ नॉट टाइटेंड, इफ नॉट टेकन यूज ऑफ दिस टेंशन बैंड प्रिंसिपल, इसमें यूनियन ही नहीं होगा, बिकॉज ऑल द टाइम दिस ट्राइसेप्स वाज डिस्ट्रैक्टिंग. ये ट्राइसेप्स इसको ऊपर खींचता और हाथ जो है हमारा हमेशा करीब हो, पोजिशन में नहीं आता. इसलिए because of this tension band principle, I keep the fracture in position and it leads to proper healing. So with these 5 principles, we apply plates, and I told you how these plates they work. These are 5 principles. Now this is nailing, intramedullary nailing. This is a femur bone. देख रहे हो? This is the femur bone. Femur bone में I told you earlier कि यदि it's a normal femoral bone, and normal femoral bone में यदि हमने intramedullary long thick stout nail डाल दिया, तो this nail is doing wonderful purpose, except rotation इसमें होता रहेगा हमेशा. जैसे जैसे पैर को हम रोटेट करेंगे, this also will rotate. उसके लिए क्या होगा कि we have developed the principle of interlocking nail.
इंटरलॉकिंग नेल क्या है? This is the nail in lower portion of femur. What happens? There are two holes, small holes in the nail. Nail में ही दो holes हैं और बाहर से देख करके हम without having opening it, मैं बाहर से एक screw इसमें डाल दूंगा through this hole, which goes through this hole and engages in the cortex here and cortex here. बात समझ आ रही है कि समझ आ रही है? And these two screws are lower down also and upper also. ऊपर में भी यहाँ पे दो होल्स हैं और दोनों में हमने स्क्रू डाल दिया. What will happen? जो डर था हमारा नेलिंग का, यदि हम एक स्टाउट नेल बीच में डाल देंगे इंट्रामेडुलरली, it can do wonders. बहुत बढ़िया है, लेकिन it can rotate. तो रोटेशन जो है, जैसे ही हमने ये हमने इंटरलॉकिंग नेल इंटरलॉकिंग स्क्रू डाल दिया, व्हाट हैपेंस? द होल यूनिट फंक्शंस एज ए वन यूनिट. और यहाँ यदि रोटेशन होगा तो नीचे भी रोटेशन होगा, बिकॉज देयर आर टू स्क्रूज फिक्स्ड इन द डिस्टल कॉर्टेक्स आल्सो, टू स्क्रूज फिक्स्ड इन द प्रॉक्सिमल कॉर्टेक्स आल्सो. सो द प्रॉब्लम ऑफ rotational instability in nail, which was usually found earlier, is annulled. इसमें खत्म हो गया. और खत्म कैसे हुआ? Because of the principles of 2 or 3 proximal interlocking screws and 2 or 3 distal interlocking screws. So with this we have almost completed the internal fixation devices in nutshell. There are still some more. तो किताब में देख लेना. There are some pins, K-wires, there are small things, but these are by and large 3 more main important internal fixation and external fixation devices. So that's all for today. Anything?